Hello and welcome to Unacademy. My name is Amole Ghatole and मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ लाइक सब्सक्रिप्शन ऑफर अनअकैडमी से चल रही है और ये 20 अप्रैल तक वैलिड है। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो द बेनिफिट्स ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको अगर आप यू आर प्लानिंग फॉर द 2021 एग्जामिनेशन or if you are planning for 2022 examination, so this is the high time. Actually already delay हो चुका है, but still if you get the admission now it will be beneficial for you, क्योंकि आपको पता है कि without mentor, without preparation it is very difficult to crack this examination. प्लानिंग चाहिए होता है, आपका इवैल्यूएशन चाहिए होता है, पेपर इवैल्यूएशन चाहिए होता है और मेंटरिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। बुक्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, वो बुक्स में से क्या क्या पढ़ना है, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ओवर हियर। और अगर ये आप प्लान लेते हो इट इज वैलिड फॉर 2022 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस एग्जाम अगर आगे जाती है तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन। और 2 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन चल रहा है प्रीलिम्स 2023 का, और दोनों के ऑफर जो है वो ऑफर अप्रैल 28 तक चल रही है। इफ अगर आप मेरा कोड यूज करते हो amol1506 then you will get a 10% discount on it. Okay, and it is the most beneficial subscription offer for you because the reason यहाँ पे important reason ये है कि यहाँ पे जितने भी top educators है इंडिया के they are going to teach you like Brunal sir for economy, you know, दूसरा कोई नहीं है। So these are the important things. और अगर आप ये ऑफर लेते हो then you will get a 20 books free of cost, जिसकी अगर आप मार्केट वैल्यू देखोगे तो इट्स 10,000 एंड इसके साथ अगर आप देखोगे तो व्हाट आर द बेनिफिट्स। These books will cover 100% syllabus completion, highly structured books है, created by the best UPSC experts, previous year questions are also included in it and updated with the current affairs. तो ये वैलिड कल तक थी लेकिन यू कैन यूज नाउ ऑल्सो। ओके, सो टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन यूज माय कोड amol1506. ओके, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस सब्सक्रिप्शन ऑफर, ये आपको पहले भी बताया था कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको प्लानिंग दिया जाएगा, वीकली टेस्ट रहेंगे, वीकली इवैल्यूएशन करके दिया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी और प्लानिंग भी आपको दिया जाएगी क्या हाउ टू प्लान द डे, हाउ टू सॉल्व द पेपर्स। ये सभी चीजें आपको अनअकैडमी में मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक आप घर के बाहर निकल नहीं सकते, तो आप घर पर रह के भी जहां पे भी हो ऑल इंडिया में आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप बाहर निकलते हो इट्स बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, वैसे भी सब बंद है, केसेस भी बढ़ रही है। और अगर आप लाइक इफ यू आर प्लानिंग फॉर एनी अदर प्लेसेस फॉर प्रिपरेशन, आपका जाने का खर्चा, रहने का खर्चा भी काफी बढ़ गया है। सो घर बैठे ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सो आपको जैसे बताया कि 28 अप्रैल तक ये ऑफर वैलिड है। सो टेक द एडमिशन एंड ट्राई to the best for yourself. Okay, thank you so much. And now we'll start with the topics like metals and non-metals. In the last lectures we have seen about nuclear technology, nanotechnology. Now we are going to discuss about the metals and non-metals. It is the general science topics which are also important for this examination. So over here you need to understand what is metal first.
सो मेटल क्या है ये आपको समझना जरूरी होता है. देन एंड देन ओनली इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. सो अगर आपके सराउंडिंग में अगर आप देखते हो तो सराउंडिंग में देयर आर different categories or two categories of elements has been found. What are these? These are metals and non-metals. Like the books you read for the UPSC preparation, the pen you use, the highlighter you use, bottle, bag, आप library में जाते समय लेके जाते हो, okay, or the door are all the non-metals. Okay. Therefore, it is important to know the properties of metals and non-metals. That's why it is important to understand what is metal and non-metal. So अगर आप origin देखोगे तो metal और non-metals का कहा है, तो minerals अगर आपको पता होगे, so elements or compound found naturally in the earth crust. From there you can found a or you can find a metal. And the important thing कि metal आपको अगर आप देखोगे तो metal can be found in a periodic table comprised on arrangement of metals or elements based on certain chemical properties at the exhibits. So metal क्या होता है? Any class of substance characterized by high electrical and thermal conductivity. जिसमें high electrical and thermal conductivity होती है, जिसके साथ malleability है, ductility है, high reflectivity of the light, light reflect होता है. अगर आपको metal को गर्म करके उसको ये करते हो, तो it's malleable. The vast majority of the metal are found in ores. That's why I say कि origin कहाँ से मिलेगा? The minerals from the earth crust, ore से मिलेगा. Contains high percentage of the particular metal which can be extracted on a large scale. Example: bauxite, hematite, iron. Okay. The vast majority of the metals are found in ores, but a few such coppers, gold, platinum, silver frequently occurs in the free state because they do not readily react with the other elements. What are the another important characteristics of metals? They are crystalline, solid. The atoms of the metal contain less than half of the full complement of electrons in their outermost shell. जैसे आपको बताया कि it is found in the periodic table. It comprises an arrangement of elements on certain chemical properties. It contains certain chemical properties, and on that basis, उसका certain एक periodic table में कहाँ पे वो पता चलेगा आपको. लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो it contains the metals, and on the right hand side it contains a non-metals in the periodic table. जैसे से आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाओगे, सो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो वैसे वैसे नॉन मेटेलिटी उनकी बढ़ती जाती है. एंड लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती जाती है. देयर आर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इन पीरियोडिक टेबल? देयर आर अराउंड 92 एलिमेंट्स दैट आर नोन टू बी फाउंड नेचुरली, out of which 92 में से 70 metals है and 22 are non-metals. Metals differ widely in chemical reactivity also. We are going to discuss physical properties, chemical properties of the metal also. The most reactive includes lithium, potassium, radium, whereas those of low reactivity are gold, silver, palladium and platinum. Low reactivity. Now metals, अगर आप देखोगे तो there are various kinds of metals are found. What are these? Alkaline earth metal, alkali metals, then transition metals, antinides and lanthanides. These are the metals or various kinds of metals which are found. Or where it is found? It is found in the left hand side in the periodic table. That is also an important thing you need to understand. Okay. So अगर आप देखोगे तो मेटल एंड नॉन मेटल्स में, जैसे मैं आपको बताया कि मेटल्स आर एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट, it conduct the heat, it conduct the electricity and are malleable and ductile. What are the examples of metals? Iron, aluminium, silver, copper, gold,
प्लैटिनम, लीड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। डे टू डे यूज में आप यूज करते हुए एल्यूमिनियम आपका यूज होता है, कॉपर का यूज होता है, गोल्ड आप पहनते हो। सो दीज आर ऑल द मेटल्स। Okay, so now another important thing about non-metals. What are non-metals? That is also important thing you need to understand. So what is non-metal and what are the properties? Non-metals are elements that do not conduct electricity and are neither malleable nor ductile or nor ductile. It means it is exactly, we can say, opposite of the metals. Okay, non-metals are elements which form negative ions by gaining an electron. That is also important thing. तो अभी अगर आप देखोगे, so example, what are the examples of non-metals? Examples: carbon, sulfur, phosphorus, silicon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. These are the examples of non-metals. And as I said, in periodic table, non-metals are located on the left side of the halogens and right side of the metals. Since noble gas and halogens are also non-metals, these elements are often referred to as non-metals. In short, we can say non-metals are those elements which do not possess the properties of metals. The number of non-metals in periodic table is very less. We are seeing out of 92, 70 are metals and 22 are non-metals. Non-metals are positioned on the right side. आपको बताया मैंने. Okay. Example भी बताया, hydrogen, carbon, nitrogen, phosphorus. These are certain examples of non-metals. So now we are going to discuss. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बताया कि metals आपको देखोगे तो left hand side में, non-metals आप right side में देख सकते हो. Around 22 elements are non-metals and 70 are metals. So these are also important things you need to understand. जैसे आपको बताया हाइड्रोजन, कार्बन अगर आप देख सकते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, these are written over here in the yellow color. These are all non-metals. So what are the properties, physical properties of metals and non-metals? So the first we are going to discuss about the physical properties of the metals. Okay, so the physical properties of the metals अगर आप देखोगे कि some physical properties of metals, what are these? Shiny in nature. These are shiny in nature. Metals occur in a solid state. It is also important thing. जैसे आपको बताया था कि malleable है, ductile है, रूम टेम्परेचर में ये solid state में मिलता है, except mercury. All metals are solid except some of the exception. And what are these exception? It's a mercury. Okay, metals are malleable in nature. What is meant by malleable? It means they can be beaten into a thin sheet. For example, elements such as aluminum, gold, silver can be beaten into the thin sheet for common usage purpose. अगर आप ज्वेलरी में गए होगे तो ज्वेलर्स के पास अगर आप जाओगे तो गोल्ड का वो थीन शीट बना के उसको डिजाइन करता है. So that is the property of metal. Metals are ductile. So what is meant by ductile? This means metal can be stretched into thin wire. कॉपर वायर आप यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए. So these are ductiles, means it can be stretched into a thin wires. We can make copper wires and aluminum wires also. All metals are equally ductile. That is important things in physical properties, that all metals are physically ductile. Only that some metals are more ductile than others. For डे टू डे पर्पस उसमें डिफरेंशिएशन रहता है. सो व्हाट इज मैलिएबिलिटी? थीन शीट में क्रिएट कर सकते हैं. गोल्ड डक्टाइल वायर कर सकते हैं हम. एल्यूमिनियम वायर्स, कॉपर वायर्स, स्ट्रेच इनटू अ थीन वायर. रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है. मेटल कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो ऑलरेडी डिस्कस की थी. It is by the virtue of property of metal that heat and electricity can pass through them and it can be used for electricity purposes. Every metal is a good conductor of heat and electricity. And one of the important thing over here,
सिल्वर हमने देखा कि सिल्वर इज ऑल्सो मेटल. It is the best conductor of heat and electricity. Copper is also good conductor. The worst conductor of heat क्या है? अगर हमने देखा कि good conductor अगर आप देखोगे, it's a silver and copper. There are worst conductor also, and that is lead. Whereas iron and mercury are poor conductor of electricity. That's why in electricity, iron use नहीं किया जा सकता. Another important thing अगर आप देखोगे तो metals are shiny. Gold shine करता है. Okay, it is due to a property of metal. They are lustrous. Lustrous होने के कारण they are shiny. Because of lustrous, they reflect the light incident on its surface. अगर sunrays उसके ऊपर इंसिडेंट करता है तो it gets reflected back. And also metals can be polished. We know it. Metals can be polished. Okay, and this is one of the reason. This is one of the main important reason metal are used to make a jewelry. Because these are shiny, they can be polished. Okay, metals are we know metals are very strong. अगर आप iron पता है तो आपको पता है metals are strong, steel are strong. कार में भी यूज किया जाता है अभी. But there are certain exceptions also, like sodium and potassium. They can be cut with the knife. Metals are also to be heavy. Weight उनका ज़्यादा होता है, heavy होता है. It is also sonorous. It means it produces a sound. They are rung or hit with any objects. Sonorous म्हणजे अगर आप hit करते हो तो it creates a sound. That's why it is called as a sonorous. And as we know, it is heavy like iron. Its melting point is also high. And at the same time, boiling point is also high. Metals have high density. इसकी अगर आप डेंसिटी देखोगे तो डेंसिटी भी हाई रहेगी. बिकॉज अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसका डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी, तो हाई डेंसिटी रहेगी. Metals in the form of an object are opaque. These are opaque also and are never transparent. These are certain properties, physical properties of the metals. Now, another important thing is chemical properties of metal. So, what are the chemical properties? अगर आप देख सकते हो, तो chemical properties, metals easily corrode. यानी अगर आप देख सकते हो images यहाँ पे, तो corrosion जल्दी होता है, corrodable है ये ज़्यादा. Corrosion reaction होता है. It is called as oxygenation. Geography में आपने इसमें देखा होगा कि exogenic forces में, in exogenic forces there are chemical weathering, physical, chemical and biological. In chemical weathering, one of the type is corrosion. It's because of corrosion क्यों होता है? Because of oxygenation process. It means it creates a metal oxide like iron plus oxygen, Fe plus O2, Fe2O3, ferrous oxide create करता है, and that because of this ferrous oxide, it is corrodable. Okay, that is important thing. And another important thing, they can lose electrons easily. Metals lose electrons easily. Their outer shell has always, or we can say shell has 1, 2 or 3 electrons. That's why they can lose electrons easily. Metal forms a metal oxide, जो हमने देखा है. It's a basic oxides. They can come in contact with the oxygen. It is the chemical weathering, carbonation process, oxygenation process, and that's why we have found the red soil also have low electronegativity. They are electropositive elements. Metals are also good reducing agents also. These are good reducing agents also. Okay, अभी हमने देखा कि physical properties में क्या क्या देखा था कि they are hard, good strength, state metal are solid, sound sonorous होते हैं. Okay, then conductivity, metals are good conductor. Example silver,
एग्जाम्पल कॉपर, लीड पुअर कंडक्टर है, मैलिएबिलिटी है, यानी थीन शीट में क्रिएट कर सकते हैं हम, डक्टेबल है यानी वायर क्रिएट कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, डेंसिटी हाई है, कलर हाई है। केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखा तो रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, लाइक पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, आयन प्लस ऑक्सीजन, आयन और फेरस ऑक्साइड। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। और कॉपर के साथ अगर आप मेटल, रिएक्शन ऑफ द कॉपर विद द मेटल क्या क्रिएट करेगा, कॉपर ऑक्साइड क्रिएट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड क्रिएट करता है। ओके, मेटल प्लस वाटर इट विल क्रिएट अ मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। Okay, these are important things you need to understand. Reaction of sodium with metal or water, it will create sodium hydroxide. Sodium plus water, sodium hydroxide create करेगा, output रहेगा। Calcium with water, it will create calcium hydroxide. अगर water के साथ create करता है metal plus water, metal hydroxide, but if metal reacts with the oxygen, it will create metal oxygen oxide. These are the chemical properties of the metal you need to understand. Magnesium अगर रहता है metal plus water, then it will create magnesium hydroxide. Okay, so these are important things you need to understand. Metals with dilute acid, it will create sodium chloride. Sodium plus hydrochloric acid, it will create sodium chloride. Example अगर आपको देखना है तो कास्ट टोपोग्राफी, calcium dibicarbonate create करता है. Okay, so these are certain examples of chemical properties of the metals. Now, metal oxide के बारे में हमने बताया कि sodium oxide plus water, it will create sodium hydroxide. These are certain examples. और अगर आप reactivity of some common metals देखोगे तो कैल्शियम से और पोटेशियम से देखोगे तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम वैसे वैसे कम होती जाती है reactivity up to gold. These are certain important chemical properties of the metals. So now, what we have seen about the non-metals also. In the non-metals, we have discussed the physical properties. क्या होगी अभी? So what are non-metals? We have discussed. It's non-metals. और non-metals यानी these are opposite to the metals. Ductile नहीं रहते. Electricity, heat conductivity उनकी नहीं रहती. And these are the non-metals. अगर आप non-metals का physical properties देखोगे, so hardness. अगर आप hardness देखोगे, non-metals are not so much hard like a metals, like a iron. Density भी उनकी कम रहेगी. They are generally soft, but exceptions भी इसमें होते हैं, like a diamond. It is the hardest naturally occurring substance. Diamond is a non-metal, but it's a hard. It can be used. अगर आप स्टाइल्स जहाँ पे बनाते हैं, जो आपके घर में ये करते हैं, उसको कट करने के लिए डायमंड यूज किया जाता है मशीन में. नॉन डक्टाइल, वायर क्रिएट नहीं कर सकते. ब्रिटल, स्टेट नॉन मेटल आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में पाए जाते हैं. बट मेटल्स वो आर फाउंड इन द सॉलिड. लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर डल अपीयरेंस, अपीयरेंस इसका थोड़ा सा डल रहता है. एक्सेप्शन भी है. व्हाट आर दिस एक्सेप्शंस? अगेन डायमंड and iodine. These are certain exceptions of the non-metals. Another important thing, sonority. It's not sonorous. Sound ज़्यादा create नहीं करते. They do not produce a typical sound on being hit. एक typical sound create नहीं करते, जैसे metal create करते हैं. Conduction, non-metals are bad conductors. We have seen the difference. अगर आपको metal समझ में आए तो non-metals are easy. It's exactly opposite. Heat or electricity poor है. Graphite, which is electron of the carbon, is the good conductor. There are certain exceptions also. Graphite, okay, of electricity and is an exception. In nanotechnology, we have discussed about it also. Carbon nanotube, graphite. Malleability and ductility. Non-metals are brittle in nature. Brittle,
सॉलिड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जैसे मेटल्स का हाई है, इसका लो रहेगा। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी compared to the metal, low density है। color non metals are very are many in colors, these are the important things कि non metals के color ज्यादा है, variable in color, many colors आपको मिलेंगे। okay, carbon in the form of graphite is non metal which conduct electricity, it can be useful। another exceptions मैंने बताया था, iodine is a non metal which is lustrous, non metal होके भी it is a lustrous होता है and having a shining surface। Carbon in the form of diamond is a non-metal which is extremely hard. It can be used to cut the styles। मैंने आपको कहा था। Diamond is non-metal which has very high melting point and boiling point। So these are the important things about physical properties of the non-metals। So what are chemical properties of the non-metal? Some chemical properties like number of electrons in the outer shell is generally 4 to 8, and in metals we have seen 1, 2 or 3। Easily gain or lose the valence electrons। Form acidic oxide, it forms the acidic oxide। another important things जैसे आपको बताया chemical properties का, तो non metals are tend to gain a electrons or accept a valence electrons। These elements do not react with the water easily। Non metals are good oxidizing agents। Non metals form acidic oxide whenever they come in contact with the oxygens, they are good oxidizing agents। when they are exposed with the oxygens, non-metal reacts with the oxygen to form acidic oxide। वहां पे मेटल ऑक्साइड दिखा था, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड क्रिएट करते हैं। एग्जांपल अगर आप देखोगे तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपैरिजन आल्सो। सो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होगी। जैसे मैंने आपको कहा रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद द ऑक्सीजन्स, it will create non-metal oxides। Non-metal from perspective of oxide with reaction with the oxygens, it will create like carbon plus oxygen, it will create carbon dioxide। when two carbon plus oxygens, if there is a chemical reaction with them, it will create carbon monoxide। Sulfur plus oxygen, sulfur dioxide। Two sulfur plus oxygen or two hydrogen plus oxygen, it will create a water। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहेगा तो क्या क्रिएट करेंगे, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन। देखिए अभी नॉन मेटल एंड ऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसका रिएक्शन होता है तो इट विल क्रिएट अ कार्बोनिक एसिड। कास्ट टोपोग्राफी में अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था आपको इसके पहले थोड़ा सा बताया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर and water vapor gets reacts, it will create carbonic acid water। that's why ताजमहल अगर आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ सर्टेन एसिडिटी उसका कलर थोड़ा सा फेंट हो गया, येलोइश हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सल्फ्यूरस एसिड इट्स क्रिएट। सो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। इन जियोग्राफी ऑल्सो यू कैन यूज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड क्रिएट करता है, and this carbonic acid when passes through the limestone topography, it will create a different types of topographies, it's karst topography like stalactite, stalagmite, polje, uwala, these are all the examples of the karst topography। so you need to understand that also। reaction of non metal with chlorine, अगर क्लोरीन के साथ करता है तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करता है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। phosphorus plus chlorine, phosphorus trichloride। These are the important things you need to understand about
metals and non-metals. Another important thing is the ionic bonds are formed because of transfer of electron from metal to non-metal. अगर metal and non-metals है उसमें ionic bond create होता है. How it has been created? When ionic bonds are formed because of transfer of electron from metal to non-metal. तो हमने देखा था metal में कितने रहते हैं? Outer shell में 1, 2 और 3 रहता है. And in non-metals में outer shell number of electrons in outer shell generally 4 to 8. So it transfers some electrons to the non-metals, and it is called as ionic bonds. In this course, metals gets positive charge. What metals get? It gets the positive charge because of transfer of electrons. Electrons transfer करने के कारण metal gets the positive charge and non-metal gets the negative charge because of acceptance of the electrons. In other words, both bond formed between positive and negative ions is called ionic bonds. Ionic bond क्या होता है? Bond formed between the positive and negative ions is called as the ionic bond. और ionic bond कैसे create होता है? When it transfer the electron from metal to non-metals, so metal get the positive electrons and positive charge, and non-metal gets the negative charge. These are important things you need to understand. Okay, now if you see the exception in physical properties, mercury is the liquid metal हमने देखा. Lead and mercury as a poor conductor of heat. We had discussed. Mercury expands significantly for the highest change in the temperature. Gallium, calcium have very low melting point. Iodine is a non-metal, but it is lustrous. Graphite conduct electricity. Diamond conduct heats and very high melting points. We already discussed that. Okay, now another important thing is the difference. What is the difference between metals and non-metals? So अगर आप property type में देखोगे metals and non-metals में physical states, these are solid at the room temperature. There are certain exceptions. What are mercury and gallium in metals? Non-metals exist as a solid gases and exception being bromide. Solid में भी रहता है, gases में भी रहता है, liquid में भी रहता है in non-metal. Density अगर आप देखोगे, so the metals की density ज़्यादा high रहती है compared to the non-metals. Melting and boiling point metals का ज़्यादा रहता है compared to the non-metals. High melting point and boiling point except gallium and calcium. Melting point is low except diamond and graphite. That's why we need to understand the use of that also. Carbon nanotube हमने देखे हैं. So अगर आप metals and non-metals आपको पता है तो it will be easy for you to understand. Lustrous कैसा रहता है? Metals are shiny and non-metals are not too much shiny or low lustrous except iodine. Another sonorous. Yes, metals are sonorous, but non-metals are not sonorous. Hardness कैसा होता है? तो hardness में generally hard except sodium. Generally soft. Non-metal generally soft रहते हैं, but there are certain exceptions. And what are these? That is diamond. Electropositive in nature. Why electropositive in nature and why electronegative in nature we had discussed in ionic bonds. अब अगर chemical properties में अगर आप differentiate देखोगे, हमने देखा metals and non-metals में, reaction with the oxygens it will create a metal oxide. Water के साथ metal hydroxide create करता है. And non-metals it's soluble. Non-metals react with the oxygen to form oxides. Non-metal oxides are soluble in water. Carbonic acid water we had seen. Carbon plus water. It will create carbonic acid water. So these are certain important things you need to understand. Okay, now what are the extraction or metals? Metal का extraction कैसा होता है? So concentration of ores में होता है. We have seen metals of high reactivity and metals of least reactivity. So metals of high reactivity अगर रहती है
तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर से किया जाता है, इट्स अ प्योर मेटल। मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी का एग्जांपल क्या है? सल्फाइड ओर। So these are certain examples of the metals and non-metals. Okay, properties हमने देखी, ionic bonds हमने देखी, what are ionic bonds and how it is useful to understand. Okay, so these are all important physical chemical properties of metals and non-metals, and we have discussed what is metal and non-metals, and we have discussed the exceptions also. So if you are any doubt regarding this, you can message over here, I'll reply it. Okay, so thank you so much, and hope you understand the topic. Okay, bye and take care from the corona. Thank you so much.